So let us start today's class. All right. We are seeing our second chapter, 9M 2.2 zeros of polynomial, isn't it? In which I think I have given you the homework for 9M 2.2 in class exercise and homework. So whatever you are having doubt of 9M 2.2, just write in chat box in class exercise and homework. So today first we will complete those your doubts, and then we will start our topic 9M 2.3, that is remainder theorem. Okay, so just give me your. Oh, my voice is cracking a lot. My voice is low. Okay, wait. I am audible, na? Okay, yes, sir, no problem. Just complete ASAP and send me. Abhiramya is also telling voice is cracking. And many students are telling that I am audible. Just do let me know. Okay. So for how many of you my voice is cracking? Just raise your hand. How many of you are not hear me properly? Means how many of you cannot hear me properly? Oh, so 12 students are not able to hear me properly, right? Any doubt in Google Classroom? You are having any doubt in Google Classroom in homework submission? Because few students were asking this, right? Because only 12 students have submitted their homework. Formula 22 of you have sent me your formula book, but regular book only few. If you are facing any problem, just let me know. अगर आप आपका होमवर्क हैंड इन या टर्न इन नहीं करोगे तो मुझे नहीं पहुंच पाएगा.
Now Snehalata is asking, sir, how to send homework in Google Classroom? No, Ahad, ऐसा नहीं कर सकते. Yes, in 9M02 only. You have to submit your homework in 9M02 only. Either it is of exercise 2.1 or 2.2. Okay, I'll see. I'll see Aditya Bardwaj, I'll see. Okay, let me clear your doubts for Google Classroom. Yes, yes, yes. Just you have to go to resubmit, Jayati. जब भी आप दूसरी बार सबमिट करोगे, आप रीसबमिट करोगे तो आपके सारे असाइनमेंट मेरे पास आ जाएंगे. ओके. ओके, वेट फॉर 1 मिनट. नाइन एम 2.2 गूगल क्लासरूम में बनाया ही नहीं है कृष्णा, तो कैसे मिलेगा? राइट, आपको रीसबमिट ही करना है. हाँ, यस, टिक मार्क इन प्लेस ऑफ असाइन. हाँ साकिब, कितनी बार बोलूं, उधर ही आपको अपलोड करना है 9M02 पे ही. Why you are typing same question and again and again? I have already written the homework. Okay, I will show you. I'm telling you now how to send it from now. Okay. Now not cancel last assignment. लास्ट असाइनमेंट कैंसिल मत करो, क्योंकि उसको रिमूव भी मत करो, क्योंकि हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहना चाहिए और आपके पास भी फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी वो काम आएगा. राइट, नाउ सी हियर. जब भी आप गूगल क्लासरूम ओपन करोगे, now whenever you will open your Google Classroom, okay, just let me show you this. See, can you able to see this? Can you able to see this Google Classroom? Right, I have shared the screen with you. Right, this is desktop version. Same can be visible to you for mobile version. Just write in chat box. Okay, now see, this is your class, Maths Class 9 2021. So when you will go to this, after that आपको यहाँ classwork में जाना है. Right, you have to click on this here, classwork. Classwork में, wait 1 minute, it's loading. Okay, my voice is cracking. Wait for 1 2 minutes then. Okay, it is cracking a lot. Wait for 3 4 minutes then. One more.
Okay, can you hear me now? I think अभी सब clear होगा, अभी voice crack नहीं होगा, isn't it? Just let me know. Okay, still cracking. Wait. Can you hear me now? Still cracking. What about now? Can you hear me now? Okay, what about now? Can you hear me now? Now it is clear. Okay, shall we start now? I hope you can clearly hear me now, right? Okay. So let us see here. Okay. So I can say 90% it is clear, right? Sure. So see here, this is how your Google Classroom looks like from desktop. Okay.
Similar way you can see it from mobile also. So this is your 9M01, this is 9M02. Okay. Now suppose you have to submit your regular book or formula book. Suppose I am opening this my regular book now. So this is my view assignment. This is already returned. Right, I already submitted and sir has already returned. Now here you can see that I will add my new assignment from here. Right. Now I can add from Google Drive or I can directly add my file. Okay. So let us add, right, let us attach file. Ignore. If voice is cracking, ignore. Don't worry. Just see the screen. Or from upload. Let us check this. Open.
Now see here. Can you hear me now? I hope you can easily hear me now, right? Now see, this I have already shared in front of you. Okay, how I have shared this? This is my student account in Google Classroom, right? This is my class, Maths Class 9 2021. I'll go in classwork, okay, or I will show you from beginning only. This is my 9M02 regular book. I'll go to view assignment. So I've already submitted this ST9M12. Okay, now this is my teacher account. So whenever you will submit anything, I'll get information from here. Okay, so here Vaishnavi and here some student and here this is me only. They have submitted. If I'll open all of three, this is my what I have submitted. This is Vikas work. Okay, so this I can see over here. It is Vikas regular book of 5th April, and it is, or I can say it is its mistake of naming, and it is of 7 May. So I think it should be 5th May. Okay, so this is his homework. Okay, and after this, this is its regular book of 7th May. Now here, this is of Vaishnavi's homework, chapter 2. Okay, so after checking from here homework, and here our Vaishnavi's comment that she is having doubt in so and so question, and from here I after checking I can return this homework. Okay, so same with here with Vikas. See, if you scan like this, I won't able to read. Okay, so scan like this only. Okay, one page can be allowable, no issue. So this I am returning to Vikas as well. Same with this, right? So this I am returning now. Now see over here. What is your main question is कि एक बार return कर लिया, उसके बाद वापस कैसे submit कर सकते हैं? Now this is my student account. Okay, this I already submitted, and now sir has returned me. Okay, already return हो गया है, ये यहीं पे है. अब I don't have to remove this. मुझे remove नहीं करना है. मोबाइल पे भी same चीज ही होगी, right? You will be able to see same things from mobile also. Okay, so now from here I will add or create another file. This file I can upload from Google Drive as well, from any link or from file. Let us open a file over here now. So let us select file from my device. Let us select this and chapter 1 polynomials, or no, this is big file. Let us take this small file is also enough. Good. Or this is also small, I think. Okay, let us take this. So if I'm taking this file, if I'm uploading, if you are removed already, then no issue. Don't worry. See, I'm uploading over here because what we want is कि आपका सारा record एक जगह पे होना चाहिए. Now, so this is my previous work. This is already written. This is my new work. Now I am resubmitting it. Now both the attachments I am turning in. Okay. Now this is my teacher account. A teacher account. If I'll go to classwork, if I'll open this 9M02 regular book, if I'll refresh now, so here I'll be getting one turn in. Now see, so this is me, one turn in. So here I am having both these two. Okay, this I already checked earlier, so now I will check only this. Okay, from here I can open from here also, turned in.
Okay, in Turnitin they are showing this only. Okay, so this is the case. Okay, so here I have already checked this ST9M12. So I will not see this, I will see this course planner. Okay, this I will check and I will return again. Return. So after returning, now students, this is my student account. Right, if I will refresh it, this is returned. So my both files are returned and I am having my all the homework here in series. So this is my 9M 2.1, this is my 9M 2.2. Then I can also upload 9M 2.3. All are in the series 9M 02. Is it clear? Right. So Nitin was asking, sir, what if we have removed already? No issue. अब already remove कर दिया तो छोड़ दो. Janvi is asking, what about ECB, sir, of first chapter? I have sent that also and you have not yet written. Yes, Janvi, wait. Let us see that. So this is chapter 1, ECB. All are remaining, 22 turn in. So I will check this ECB and I will send you after this today's class because there are 22 students. It will take time. Okay. So next. Prahlad sir, if there will be more than 5 files, then it would make a confusion. आप उसका टाइटल दे दोगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, जस्ट उसका टाइटल दे दो ना अच्छे से, डेट वाइज, दैट इट इज प्रहलाद 5th में, प्रहलाद 7th में, प्रहलाद 10th में, then there will be no confusion. Okay, now any doubt regarding Google Classroom? So I have cleared all your doubts of Google Classroom, isn't it? COP means, Prahlad, what are you telling? Sir, if we will cop CO.P means, okay. If you are having any doubt about Google Classroom, just let me know. Okay. Akshata. हाँ बोलो अक्षता, you are unmuted now. Speak your doubt. हाँ सर, अगर हम लोग योर वर्क में दूसरा वाला डालेंगे जो अभी हम लोग रिसेंट दबाए, क्या रिसेंट? तो फिर सर मतलब भी मैं रेगुलर बुक भेज रही हूँ आपको. हाँ और पहले का भी है, तो फिर मैं सबमिट करूंगी तो दोनों आपको आएगा ना सर? हाँ, सबमिट नहीं करोगे तो कैसे दिखेगा? सबमिट तो करना ही पड़ेगा ना. तो आपका डाउट क्या है? सर अगर अभी आप दबाए सर ST9M12 हाँ और कोर्स प्लानर, हाँ तो पहले आप ST9M12 जो और फिर अभी कोर्स प्लानर भेजने वक्त अब सबमिट करने से 9M1.2 भी जाएगा, कोर्स प्लानर भी जाएगा ना हाँ, सर? दोनों आएगा, दोनों आएगा. हाँ ठीक है. हाँ दोनों आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना. व्हाट इज द इश्यू देन? अक्षता, Akshata, can you hear me? Okay, Prajwal, I will check after the class and I will return. Okay, so shall we start our class now? Any other doubt regarding Google Classroom?
हाँ वास्तव, you can submit right now, no issue. Okay, now wait. Sir, what if we delete the file which we have handed earlier and attach the new file and then hand in? तो उसमें हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपके सारे होमवर्क का, राइट? आपके सारे होमवर्क का रिकॉर्ड रहना चाहिए हमारे पास. स्नेहलता, सर कैन यू अनम्यूट मी? ओके, बोलो स्नेहलता, यू आर अनम्यूटेड नाउ. ओके समर सेंड. हाँ, इसीलिए तो कैम स्कैनर से आपको सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे समर, इसलिए गूगल क्लासरूम ओपन करके वहां से अटैच करो. बोलो स्नेहलता, व्हाट इज द डाउट? सर ये कैम स्कैनर से गूगल क्लासरूम को भेजना है ना सर, ये फोटो कैसे भेजना है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर. मत करो ना, कैम स्कैनर से करना ही नहीं है. मतलब कैम सर वो स्कैनर से स्कैन करके रख दो, फिर भेजना कहाँ से है? गूगल क्लासरूम से ओपन करके अपलोड करो, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया. हाँ सर. ठीक है, कैम स्कैनर से हाँ शेयर मत सर. करो, गूगल क्लासरूम से करो. ओके सर. ठीक है. हाँ यस यस सर. चलो, ओके, एंड वास्तव यू कैन सेंड नाउ, नो इशू. चलो अभी देख लेते हैं. सो गूगल क्लासरूम का आपका हो गया. अब आपके डाउट्स देख लेते हैं फटाफट. तो इन क्लास एक्सरसाइज question 3, 4, 5, 6. So let us see your question number 3 first. So these are the question based on zeros of polynomial. In class exercise question number 3, they are asking that if x is equal to 4 by 3 is a zero of polynomial, x is equal to 4 by 3 is zero of polynomial, then f of, or polynomial f of x is given as 6x cube minus 11x square plus kx minus 20. Then find the value of k. Okay. Now here Vasu is asking, sir, what is p of x? Okay. See, p of x is nothing but it is polynomial in x. Right? It is symbol of polynomial. So it is polynomial in variable x. Right? Or it is polynomial in one variable x. Is it clear? Now they are telling that x is equal to 4 by 3 is zero of this polynomial. So what is its meaning? Can anyone tell me? If x is equal to 4 by 3 is zero of f of x, then what is its meaning? Raise your hand, tell me. इसका मतलब क्या होगा? बोलो सृष्टि. सृष्टि SM, you are unmuted now. अगर x is equal to 4 by 3 f of x का 0 है तो उसका मतलब क्या होगा? सृष्टि, can you speak? बोलो अक्षा, उसका मतलब क्या होगा? You are unmuted now. बोलो मानसा, you are unmuted now. अगर x is equal to 4 by 3 उसका 0 है तो मतलब क्या होगा? सर मतलब x का हाँ, वापस x का वैल्यू 4 by 3 रखूंगा तो the answer is 0. Okay. Now here Krishna is asking, Srishti, I was
trying to unmute you, but because there are some network error, I can say. Now Krishna is telling sir 0 means 0% over here. यहाँ पे percent जैसा कुछ नहीं है Krishna. Now, so when I will substitute x is equal to 4 by 3, my answer should be 0. So if I am substituting x is equal to 4 by 3 in this equation, this will be 6 into 4 by 3 whole cube minus 11 into 4 by 3 whole square plus k into 4 by 3 minus 20 is equal to 0. So therefore 6 into, now 4 cube by 3 cube. 4 cube is 64, 3 cube is 27. 4 square, 3 square plus 4k by 3 minus 20 equal to 0. 3 2s are 6, 3 9s are 27. So here my LCM will be 9. I have to find the value of k. K को उसी तरह ऐसे ही रहने दो. So it is 64 into 2, that is 128. 16 into 11, shortcut, 6 plus 1, 7, 176. Chalo, here I have multiplied with 3, 4 3s are 12k, minus 9 2s are 180. Whole divided by 9 is equal to 0. 9 will go to that side, it will be equal to 0. So 12k now plus 128 will be as it is first. 6 and 0, it is 6, it is 15, it is 356 is equal to 0. So therefore 12k, 16 minus 8, 8, 4 minus 2, 2, 3 minus 1, 2 is equal to 0. So 12k is equal to 228. So k will be equal to 228 by 12. Just check, can you divide it with 12 or not? 12 ones are 12, 108, 12 nines are 108. So k will be 19. Is it clear? Navya is telling screen is frozen. Srishti is telling screen is blur. Mansa is telling to repeat. Okay. Srishti is telling I am not audible at all. Okay, let us see. So इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि अगर 4/3 इस इक्वेशन का 0, इस पॉलिनोमियल का 0 है f of x का, then find the value of k. So here, if 4/3 is polynomial of f of x, then f of k should be equal to 0. So if I put x is equal to 4/3 in this polynomial, it will be 6 times 4/3 whole cube minus 11 times 4/3 whole square plus k times 4/3 minus 20 equal to 0. If I simplify, I will get 6 into 64 by 27 minus 11 into 16 by 9 plus 4k by 3 minus 20 equal to 0. So after simplification, I will get 128 minus 176 plus 12k minus 180 whole divided by 9 equal to 0. And after simplification, I will get 12k minus 228 equal to 0. So 12k equal to 228, k equal to 228 by 12, k equal to 19. Is it clear? Shall we move to next question? Shall we move to question number 4?
Let us see your in-class exercise question number 4. Find the zeros of the following polynomials. Okay, now we have to find zeros. Now how we are going to find zero of the polynomial? Zero is the value of x for which your polynomial should be equal to 0. So I'll make f of x equal to 0. I'll simplify it, and then I'll find value of x. This will be my procedure. So your first polynomial is ax plus b. तो फाइंड इट्स जीरो, वो मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन 4 तो दिखाया था। फिर इसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 4 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 4th क्वेश्चन मैंने दिखाया था। क्वेश्चन 4 के पर्टिकुलरली कौन से पार्ट में डाउट है? प्लीज टाइप योर डाउट इन चैट बॉक्स। सो ax प्लस b को मैं 0 ले लूंगा, तो माई ax विल बी माइनस b एंड x विल बी माइनस b बाई a. इज इट क्लियर? Okay. Any other doubt? Second, third, fourth, fifth. Very good, Ahad. Whole question 4. Question 4 का आपको 4th तो दिखाया था 7x minus 77. समझो पहले, समझे बिना देखोगे तो फिर डाउट ही होगा। x minus 0.79, अब इसका 0 फाइंड करना है, तो x minus 0.79 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0.79. एंड अहद, सबसे पहले आपके नाम के आसपास जो आपने डिजाइन बनाई है ना, वो निकाल दो, अदरवाइज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम क्लास। और आपको देख के यशस, संचित, इन सब ने अपने नाम के आसपास डिजाइन बना लिया, वो सारी चीजें निकाल दो, उसकी वजह से नहीं आते हो आप। हाँ मानसा, टेल मी व्हाट इज योर डाउट? यस, this zero, this value of x is 0 of your polynomial. Mansa, tell me what is your doubt over here? Sir, equation है x equals to p bracket x सर इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल डालना है? हाँ, अब वही चीज है ना, सी इसमें क्या है, आपको दिया गया है p of x is equal to ax plus b, isn't it? अब हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ब्रैकेट में मैं x की कौन सी वैल्यू डालूंगा तो आंसर 0 आएगा। अब मुझे ये पता है वो जो भी वैल्यू डालूंगा वो डाल के मेरा आंसर 0 आएगा, isn't it? और ब्रैकेट में मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैंने 0 ले लिया, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे x का आंसर मिला माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए मैं इसमें रख के देखता हूँ, तो अगर मैं इसमें माइनस बी बाई ए रखूंगा तो इट विल बी a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ये a कैंसल, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब पता चला मानसा? सर पर हम p of x के बजाय p of a equals to x plus b equals to 0 भी तो रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी करके 0 रख सकते हैं, बट हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए p of x का आंसर 0 आए। ओके सर, बट क्वेश्चन में फाइंड zeros of the following polynomial। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। सी या सर, तो हम a हाँ, का बोलो। वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं। a का वैल्यू नहीं फाइंड करना है सर, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है a इज नॉट इक्वल टू 0, वो बस आपको एक कंडीशन दी गई है। वो आपको क्यों दिया गया है? बिकॉज a आपका डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे और अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ a ओवर हियर स्टूडेंट्स, राइट? सी a इज वन कांस्टेंट, ax प्लस b का मतलब क्या है? ax प्लस b का मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल हो सकती है 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 6x प्लस 8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज योर वेरिएबल ओवर हियर, a and b आर कांस्टेंट ओवर हियर। मानसा पता चला? स्टिल कंफ्यूजन? ओके, अभी इज इट क्लियर? ओके, कि हम a क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? ओके, बिकॉज a इज कांस्टेंट and our motive is to find x. Now Janvi is telling that Mahi is not able to get into the meeting.
Why? Just click on the link, right? Click on the link to get into the meeting. Wait, let me see if I can do something. Okay, don't worry Janvi, I have sent her the meeting link. चलो, so question 4 का आप कौन सा अक्षता पूछ रही थी 5th part. Okay, and Srishti is telling that my voice is breaking. But Srishti, I think many students are able to hear me, right? So you just use recording after the class. चलो, so 5th, इसी का question 4 का 5th part, that is x plus half. If I am taking, if I have to find 0 of this polynomial, so x plus half equal to 0. So x will be equal to minus half. Is it clear? Chalo, any other doubt in question 4? Shall we move to question 5 and question 6? Okay. So in question 5, they are asking if x is equal to 0 is a 0 of polynomial. X is equal to 0 is 0 of polynomial. F of x is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Then find the value of b. We have to find value of b. जैसे वो k वाला क्वेश्चन था ऐसा ही है. Now if x is equal to 2 is also a 0 of polynomial, then find the value of a. फिर अगर x is equal to 2 भी 0 हो, then find the value of a. So here they have given both the things. We will go step by step. First, if x is equal to 0 is 0 of polynomial, then f of 0 should be equal to 0. Implies 2 times 0 minus 5 times 0, it is 0 cube, it is 0 square, plus a into 0 plus b will be equal to 0. Here this all things will be 0 minus 0 plus 0 plus b equal to 0. So therefore my b should be equal to 0. Is it clear? चलो अब आगे. X is equal to 2 is also 0 of polynomial, then f of 2 should be also equal to 0. So f of 2 will be 2 times 2 cube minus 5 times 2 square plus a times 2 plus what is the value of b? b तो आपका 0 हो गया है. So 0 is equal to 0. So therefore, ये 8 2 is 16, 2 square 4, 4 5 is 20 plus 2a equal to 0. 16 minus 20 is minus 4. Minus 4 plus 2a equal to 0. So 2a is equal to plus 4. So a is equal to 4 by 2. So a is equal to 2. Is it clear now? Question number 5. Shall we move to question 6? मतलब बचा. Question 6. हाँ Janvi, it is there only. Which question you want? Question 5. What should be added to polynomial so that 3 is a 0 of the resulting polynomial?
Question 5 is already there, don't worry. Then question 6 they are asking that what should be added to polynomial. आपको एक polynomial दी गई है x square minus 5x plus 4. Now what should be added to this polynomial so that this 3 becomes 0 of this polynomial. Okay, चलो yes, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. Okay, so now, so tell me how we are going to proceed this. This is also easy question, isn't it? Suppose we will assume over okay, we are adding k in this polynomial, right? Suppose we are adding k in this polynomial such that after adding k, my 3 will become 0 of this polynomial. So here my p of 3 should be equal to 0. So 3 square minus 5 into 3 plus 4 plus k is equal to 0. So 3 square is 9, 5 3s are 15, plus 4 plus k equal to 0. 9 plus 4 13, 13 minus 15 is minus 2 plus k equal to 0. So your k is equal to 2. So your final answer is 2. 2 should be added to the polynomial so that 3 can become 0 of this polynomial. Is it clear? Okay. Now where Janvi is telling that for once can you show me the half part of question 5? See Janvi. And Yashash sir, if an expression has about 7 terms and only one variable has negative power, then the entire expression will not be a polynomial. Yes, Yashash. Jayati, yes sir. Okay, Akshata sir, please repeat. Okay, Akshata, which question? Question 5 or question 6? Which question should you want? मतलब कौन से question का आपको repetition चाहिए? Just let me know. Question 6. Now see, in question 6 they are asking that what number should be added. Yeah, what should be added to question 6 so that 3 can become 0 of this polynomial. So we are assuming that k should be added to this p of x so that 3 can become 0 of this polynomial. So if I am adding k in this polynomial will be x square minus 5x plus 4 plus k. Now 3 is 0 of this polynomial, so p of 3 is equal to 0. Okay, so if I put x is equal to 3 in this, I'll get 3 square minus 5 into 3 plus 4 plus k equal to 0. And after simplification, I'll get k equal to 2. So my answer is 2. Is it clear now? Bolo bolo, Miss Akshata. Chalo. So let us see your doubts of homework exercise. So in homework exercise, you are having doubt in question 1, question 2, last part of question 3, question 4, question 5, question 6, question 8. डॉक्टर से कुछ किया ही नहीं है. चलो होमवर्क एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब समझो यहाँ पे एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ये सी हो गई, राइट. दिस इज योर पॉलिनोमियल. या कोई भी नंबर हो सकता है. ये आपका नंबर हो सकता है p of x is equal to 5, p of x is equal to 3, p of x is equal to -2. ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, राइट. इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन वापस मत लिखो स्टूडेंट. आई एम हैविंग योर डेटा, डोंट वरी. सो अब अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके कितने जीरोस मिल पाएंगे.
0। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है ही नहीं। इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू 5 रखो, 1000 रखो, करोड़ रखो, मिलियन रखो, -0 रखो, 0 रखो, रेशनल नंबर रखो, इरेशनल नंबर रखो, आंसर तो 5 ही आएगा, आंसर 3 ही आएगा, आंसर -2 ही आएगा, आंसर वो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसके एक भी जीरोस नहीं मिलेंगे। एवरीवन क्लियर विद दिस? सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एक भी जीरो नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2, इफ माय पॉलिनोमियल इज जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? जैसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपको याद हो, तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 0x², 0x, राइट, 0x क्यूब, 0x टू द पावर मिलियन। अब इसमें x की जितनी भी वैल्यू रखो सबके लिए आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे? इनफाइनाइट। आप एज मेनी वैल्यूज ऑफ x रख सकते हो, जितने रखना चाहो उतने रख सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, so number of zeros of non-zero constant polynomial is 0 and number of zeros of a zero polynomial is infinite। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। Okay, this both are important questions, concept busters. These are called concept busters. Okay, so homework question 1, question 2. Now let us see your question number 3's last part. So in question number 3, if p of x is equal to x² minus 2 root 2x plus 1, I have to find value of p of 3 root 2. So it is 3 root 2 whole square minus 2 root 2 into 3 root 2 plus 1, isn't it? Chalo. Here Prahlad is telling that he is still having doubt in question 2. Yes, Prahlad, tell me what doubt you are facing in question 2. You are unmuted now. Tell me, Prahlad. Sir, can you repeat question number? Which question? Question 2. Yes, sir. Okay. In question 2, they are telling that how many number of zeros are possible for zero polynomial. अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ? इट इज दिस, p of x is equal to 0। और क्वेश्चन 1 में आपको दिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। साकिब को क्वेश्चन 1 में अभी भी डाउट है। क्वेश्चन 1 में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब p of x का आंसर कुछ भी कांस्टेंट आएगा। कुछ भी कांस्टेंट आएगा तो वो 3, 5, -2, 4, 6 कुछ भी आ सकता है। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो? कि x की उसमें कौन सी वैल्यू रखने से आंसर 0 आएगा। बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ही वो है कि आप उसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसकी वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, 3 की 3 ही रहेगी, -2 की -2 ही रहेगी। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी आपकी 0 बनेगी ही नहीं। कभी आपकी 0 बनेगी नहीं तो उसके लिए एक भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 0। तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरो 0 बिकॉज उसके लिए एक भी 0 पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो 0 पॉसिबल एट ऑल। एंड फॉर क्वेश्चन 2, जीरो पॉलिनोमियल को आप कैसे भी लिख सकते हो। जीरो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज 0x² plus 0x plus 0x क्यूब। ऐसे जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। सो यू कैन इंक्रीज इट टिल इनफाइनाइट। तो उसमें x की जितनी भी वैल्यू रखो उतनी कम है, राइट। सो हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस यू विल बी हैविंग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 1 मिलियन रखो, 1 बिलियन रखो, 1 ट्रिलियन रखो, आंसर 0 ही आएगा। इज इट क्लियर? Now question 1, question 2 clear to you, Prahlad and Sakib? Just let me know. Type in chat box. Okay. So question 3. Now 3 root 2 whole square. So this square will be applicable to both. It is 3 square and root 2 whole square.
minus 3 2 is 6, and root 2 into root 2 is 2, plus 1, right? Now root 2 whole square will be 2, 3 square is 9, 9 into 2, minus 6 into 2, plus 1, 9 2 is 18, 6 2 is 12, plus 1, 18 minus 12 is 6, plus 1, answer is 7. Is it clear? Okay, so ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3. Now we are having doubt in fifth part of question number 4. Let us see that. In question number 4, its fifth part, we have to find P of 0 and P of 1. So P of M is 100 m to the power 499 minus 99 m to the power 500. Okay, we have to find P of 0 and P of 1. So here P of 0 will be equal to 100, 0 to the power 499 minus 99, 0 to the power 500. Now 0 to the power anything 0, 0 to the power anything 0, 0 minus 0, 0. P of 1 is equal to 100, 1 to the power 499 minus 99, 1 to the power 500. So 1 to the power 499 is 1 only, so it will be 100 into 1. This will be 99 into 1. So this will be 100 minus 99. Answer is 1. So here P of 0 is 0 and P of 1 is 1. So is it clear? Fifth part of question 4. Okay. Now let us see your doubt of question 6 and question 8. तो P of 3 root 2 ही तो फाइंड किया है क्वेश्चन 3 में. Because we have found P of 3 root 2 only in the question. It is 7. Okay. चलो इसके बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन 6 and question 8. Let us see those. In question 6, they are telling that for what values of k की कौन सी वैल्यू के लिए -4 is 0 of p of x is equal to x square minus x minus 2k plus 2. For what values of k -4 is 0 of this polynomial. Okay, so अगर -4 इस polynomial का 0 है, then p of -4 should be equal to 0. Okay, चलो अब उसमें अगर मैं x की वैल्यू -4 रख रहा हूँ, so my polynomial will become -4 square minus of -4 minus of 2k plus 2 is equal to 0. चलो 4 square is 16 minus minus plus 4 minus 2k minus 2 equal to 0. 16 plus 4 20, right? 20 minus 2 2k will go that side plus 2k. 20 minus 2 is 18 is equal to 2k. So k is equal to 18 by 2 implies k is equal to 9. This is my answer. Is it clear? Right. Now let us see your final doubt. Question number 8. Question 6 clear हो गया students? Just let me know. Will you explain again? Why not? See, if k, I have to find value of k such that -4 is 0 of this polynomial. Okay. अगर -4, हाँ तो क्वेश्चन 9 भी देखेंगे क्वेश्चन 8 के बाद. चलो अगर -4 इस polynomial का आपका रूट है, so that means if I am inserting -4, then p of -4 will be equal to 0. I will solve question 8 and question 9 after this. So here -4 whole square minus of -4 minus of 2k plus 2 equal to 0. So after simplification, I will get 16 plus 4 minus 2k minus 2 equal to 0. Further simplification, I will get 18 equal to 2k and k equal to 9. So is it clear to you Ahad now? Shall we move forward? Okay. चलो अब इसके बाद आपको देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, then our new topic.
क्वेश्चन 7 में भी डाउट है क्या? घर से कुछ करना ही नहीं है, अब तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन 7 में क्या है अहद? इन क्लास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 4 है उसी जैसा है, जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल की, राइट। एज फॉर एग्जांपल 3x + 8 है, तो 3x + 8 को 0 ले लो तो x मिल जाएगा -8/3, हो जाएगा ना। क्वेश्चन 7 का एक दिखा रहा हूँ। सपोज पहला है cx, इसका 0 फाइंड करना है, तो cx को 0 ले लो, तो x क्या हो जाएगा आपका 0/c, वेयर यार x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0 बिकॉज 0/c इज 0। ओके, इन द सेम वे और भी कोई कर सकते हो। सपोज फिफ्थ दिखा देता हूँ लास्ट, तो 3x + 8 का 0 फाइंड करना है, उसको 0 ले लो, so your 3x will be equal to -8, so your x will be equal to -8/3, not a big deal, isn't it? Chalo, now your question 8 and question 9. If a, b, 8 - 1 are zeros of polynomial, a, b, 8 - 1 are zeros of polynomial s of x, obviously अगर ये उसके zeros हैं तो s of a is equal to 0, s of b is equal to 0, s of 8 is equal to 0, s of -1 is equal to 0. तो हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू we have to find s of a minus s of b. Just put all the values. What is s of a? 0. What is s of b? 0. 0 minus 0, 0. Second question, we have to find s of a whole square minus s of -1. Chalo, s of a, it is 0 square. S of -1, 0. 0 minus 0, 0. Chalo, s of -1 minus s of b plus a plus 9 divide by s of 8 plus s of a plus 501. Chalo. So s of -1, 0. S of b, 0. What is a? A is a only. Plus 9. Divide by s of 8, 0. S of a, 0. Plus 501. So in numerator, I'll be left with a plus 9. In denominator, I'll be left with 501. So everyone clear with this question 8? The question 8 सबको clear हो गया? Just let me know. बोलो बोलो, चुप मत रहो, फ्री में नहीं बैठते यहाँ पे। Students, give me some response. Okay. चलो अब हम देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9. If x is equal to -2 is the zero of polynomial. अगर मान लो x is equal to -2 है, if it is zero of the polynomial √2 into x plus p. Okay, Mansa is telling question 8 third part. Okay. Don't worry, Yashash. Use recording after class, but this time use recording as early as possible. Okay, so that you can send homework. So I'm repeating this third part once again. The question is s of -1 minus s of b plus a plus 9 divided by s of 8 plus s of a plus 501. So here my s of -1 is 0. My s of b is 0. My a, I don't know. A is any constant. So I'll put a as a only. 9 is constant. S of 8, 0. S of a, 0 plus 501. So in numerator, if I simplify, it is a plus 9. In denominator, it is 501. So it is a plus 9 by 501. Is it clear? Mansa? Okay, yes, sir. Now, if x is equal to -2 is 0 of this polynomial and is also 0 of the polynomial px square plus kx plus 2 √2, then find value of k, and we have to find value of this k. Okay, so x is equal to -2 is 0 of both of these polynomials, right? So suppose if I'm writing this polynomial as p of x, but already p is inside, so let us write this polynomial as f of x.
and write this polynomial as g of x. So here, since x is equal to minus 2 is root of f of x, then f of minus 2 should be 0. Now if I put x is equal to minus 2, it will be root 2 into x is what? Minus 2 plus p is equal to 0. Now if root 2 will go that side, 0 by root 2 is 0 only. So here p minus 2 is equal to 0. So here p will be equal to plus 2. Okay. Now if x is equal to minus 2 is root of g of x as well, then g of minus 2 is also equal to 0. If I simplify this g of minus 2, this will be p minus 2 square plus k minus 2 plus 2 root 2 equal to 0. Minus 2 whole square is 4p minus 2k plus 2 root 2 equal to 0. P is equal to 2. So if I put this 4 to the 8 minus 2k plus 2 root 2 equal to 0. So अगर 2k उस तरफ जाएगा, so 8 plus 2 root 2 is equal to 2k. Now I have to find value of k. So I'll divide 2 with this side. So k will be 8 plus 2 root 2 whole divided by 2. So this will be 8 by 2 plus 2 root 2 by 2. This 2 will get cancelled out, and here 2 4s are 8. 4 plus root 2. So my k will be 4 plus root 2. I'm repeating this question once again. हाँ वो भी चलेगा. Right, Navya is telling that first she had removed the bracket and then she had solved. वो भी चलेगा, no issue. So here x is equal to minus 2 is roots of both this polynomial f and g. Then we have to find value of k. अब k find करने के लिए पहले p तो find करना ही पड़ेगा. तो x is equal to minus 2 पहले मैंने इसमें रख दिया f of x में. So root 2 into x plus p equal to 0. X is minus 2. Root 2 into minus 2 plus p equal to 0. So after simplification, ये root 2 इधर गायब हो जाएगा. So p is equal to 2. Now if I'll put p is equal to 2 over here, this g of x, in its simplification it will become 4 to the 8 minus 2k plus 2 root 2 equal to 0. So 2k will be equal to 8 plus 2 root 2. K is equal to 8 plus 2 root 2 by 2. It is 4 plus root 2. Here Prajwal is telling or asking, sir, where did root 2 go in f of x? root 2 यहाँ पे multiply में है प्रज्वल, वो इस तरफ जाएगा तो 0 divide by root 2 हो जाएगा. So 0 by root 2 is 0 only. Sir, how to find p by multiplying root 2 with x plus p? तो वो root 2 दोनों जगह multiply होगा, तो वो दोनों जगह पे multiply होगा तो फिर दोनों जगह से cancel हो जाएगा. Sir, we can also take common from the numerator and cancel out. That only. Here you can also take 2 common from numerator and then you can cancel. Right. Simplification can be done in so many ways. So is it clear? Can we move to next question? Bolo. Students. एडवांस क्वेश्चन 1 में किसको डाउट था? बोलो. ओके, चलो. हाँ नितिन. सो नितिन, अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी 5 बज गए हैं, तो हम एडवांस क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं फिलहाल. वो आसान है, मैं आपको बताऊंगा. उसमें पहले आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है. ओके, थोड़ा ट्राई करना है, नहीं आएगा तो बताना. नाउ लेट अस सी रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, तो वो भी लंबा टॉपिक है. आज आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया ना, बट सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं सिखाया तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे. ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं.
नाउ टेल मी, क्वेश्चन 8 में आपने पढ़ा था क्या पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन मेथड? वो हमने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन 8 में, राइट? हमने ज्यादा से ज्यादा पढ़ा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय या मोनोमियल। अब अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल से करना हो तो तब मैंने आपको क्वेश्चन 8 में क्लास 8 में बोला था कि वो हम पढ़ेंगे क्लास 9 में। ओके, तो चलो अभी फटाफट देख लेते हैं। आई विल टेक योर 15 to 20 minutes एंड लेट अस फिनिश दिस कंसेप्ट। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एडवांस क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है यशस, मतलब क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। ओके ना, दो चीजें अभी मुझे आपको दिखानी है। एक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स और एक है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो फटाफट पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसके बाद मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम दिखाऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे करना है। ओके, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम और उसका मतलब क्या है। ओके, चलो तो देख लेते हैं। चलो तो उसके लिए यशस पहले चैप्टर खत्म होने दो। ओके, नाउ सी, नहीं फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट? हम प्रॉपर वाला लॉन्ग डिवीजन पढ़ेंगे, राइट? So let us start our new topic, that is 9M 2.3, which is called division of polynomials and remainder theorem. So in which first let us see division of polynomials. Okay, so I'll show you this with one example only. हम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ओके, नाउ सी। अच्छा, चैप्टर 1। ओके ओके, यस यस, वेट। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको एक वो वाला क्वेश्चन कराना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। यहाँ पे आपको जितना दिया गया है सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक बाहर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ओके, सो सपोज अवर क्वेश्चन इज डिवाइड x plus 3x square minus 1 by 1 plus x. Divide x plus 3x square minus 1 by 1 plus x. ओके, ना समझो, यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो मैं आपको डिवीजन भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको सारे स्टेप्स भी दिखा रहा हूँ। ओके, सो हियर योर स्टेप 1 इज, I'll write steps with black marker. Okay, so your step 1 is write polynomials in their standard form. Now what is the standard form, students? That is in descending powers of x, right? What is standard form? That is in descending powers. Powers आपकी maximum पहले आएगी फिर decrease होती जाएगी, so that means here we have to divide. So this can be written as 3x square plus x minus 1, isn't it? Because maximum power is 2, then its lesser power is 1, and here nothing is mentioned, then it is x to the power 0. So we have to divide this by x plus 1. Here x to the power 1 and here x to the power 0. So let us divide this. Okay, मैं यहाँ पे division करता जाऊँगा.
So in this portion, I am going to do division. That is 3x square plus x minus 1, and I am going to divide it with x plus 1. Okay, so this is my step 1. Now my step 2 is divide first term of dividend by first term of divisor. Okay, divide first term of dividend by first term of divisor. तो चलो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे डिविडेंड की 3x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म डिवाइजर की क्या है x, सो 3x स्क्वायर बाई x, सो ये x कैंसल, आंसर इज 3x, राइट। सो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करके आपको इसको क्वोशंट बनाना है। ओके, सो हियर इफ विल डू दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। तो इसका जो भी ये डिवीजन करके जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। ओके, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। Is it clear? Right. This will be your first term of quotient. So now after this, when you got this first term of quotient, okay, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे। So this is my 3x. We'll write it over here. अब ये 3x से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। So here 3x into x is 3x square and 3x into 1 is 3x. So 3x into x, 1 is x square, 3x into x is x square and 3x into 1 is 3x. Okay. So what we are going to do in step 3, we'll multiply our divisor with this quotient of first step. We'll multiply our divisor with this quotient of first term. Okay, so that is 3x into x, 3x square, and 3x plus 3x into 1, 3x. Now Manoj is telling that repeat question step 2 repeat करने के लिए step 2 में हमें क्या किया, first term of dividend by first term of divisor. What is first term of dividend? 3x square. What is first term of divisor? X. So 3x square by x, it is 3x. Okay. तो सेकंड स्टेप हो गया। चलो नेक्स्ट, फिर हमने 3x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? अब नॉर्मल डिवीजन है, अब यही सारी चीजें रिपीट करनी है। अब यहाँ पे एक बार हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, चेंज द साइन, राइट। सो विल मल्टीप्लाई दिस, ओके, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम डिविडेंड एंड सब्ट्रैक्ट result. This is our result, right? Subtract the product result from dividend. Okay, so 3x square minus 3x square will be 0, x minus 3x that is minus 2x, फिर minus 1 को हम नीचे उतारेंगे, it is minus 1. Okay, then step 4, this minus 2x minus 1 will be our remainder. Now we will repeat this process, right? We'll repeat from step 2 and step 3, right? Till we get remainder our 0 or till we get something as a remainder. So right, okay. So our step 4 is repeat step 2 and 3. Okay, चलो अब step 2 क्या था? First term of dividend by first term of divisor. Now what is my first term of dividend? Minus 2x. So if I'll divide minus 2x with first term of divisor, that is x.
What is my quotient? -2, right? So this -2 will be my next quotient over here, or second term of quotient. So if I'll multiply -2 with x and 1, so -2 into x is -2x. -2 into +1 is -2. Now I have to subtract. So it is plus and plus. It will get cancelled out. 2 minus 1 is 1. So 1 is my remainder. So here my final quotient is 3x minus 2 and 1 is my remainder. Okay. So let me repeat this question all once again, right? I will repeat all this process, all these 4 steps. Okay. Then you will clear with your doubts. Then I'll be clearing your doubts. Okay. So this is our new topic, that is division of polynomial, as well as we have to see remainder theorem. So in division of polynomial, our step 1 is, first we have to convert the given polynomial in standard form. What is the standard form? It is in descending powers of x. x की descending powers में आपको लिखना है. तो x plus 3x square minus 1. तो उसमें x की maximum power कौन सी है? 3x square. So it will be your 3x square plus x minus 1. Now second 1 plus x. उसमें x की maximum power कौन सी है? 1. तो उसको पहले लिख देंगे. So it will be your x plus 1. Now we will follow these steps. Now what is the step over here? So step 1 is, step 2 is divide first term of dividend and first term of divisor. So when you will divide first term of dividend with first term of divisor, you will get first term of quotient. Okay, I'm repeating it once again. So here, when you will divide, you will get first term of quotient. So here first term of dividend was 3x square. If I am dividing it with first term of divisor, it was x. So 3x square by x will get cancelled out. So first term of quotient is 3x. So I'll put 3x over here. So this is my first term of quotient. After that, I will multiply my whole divisor with this first term of quotient. My whole divisor is x plus 1. Now if I'll multiply this x plus 1 with whole 3x, now away your doubt will get cleared out. 3x into x is 3x square. Plus 3x into 1 is 3x. Okay. And I will subtract result from dividend. This is my result. I will subtract it from this dividend. So 3x square minus 3x square 0. X minus 3x minus 2x. And minus 1. उसको मैं नीचे ले लूंगा. Now here I am having, now I will repeat what is my step 4. Repeat steps 2 and 3. What is step 2? Now this is my new dividend and this is my divisor only. Now divide first term of dividend again with first term of divisor. So my first term of dividend is minus 2x. My first term of divisor is x. So minus 2x by x, my answer is minus 2. So if I, and what will be my answer? I'll put it is my quotient. And now my step 3, multiply whole divisor with this quotient. My whole divisor is x plus 1. If I multiply x plus 1 with minus 2 into x, minus 2x. Plus minus minus 2 into 1, 2. Now I will subtract the result from dividend. So I'll change the sign. Minus 2x plus 2x, 0. Minus 1 plus 2 plus 1. So my final quotient is 3x minus 2 and my final quotient remainder is 1. So is it clear now, Ahad? Step 3 का माइनस आपको पता चल गया. ये माइनस क्या है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है रिजल्ट को डिविडेंड से, इसलिए माइनस कर रहे हैं. अब यार आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक 3x स्क्वायर प्लस 3x वाला, राइट. एंड मनोज स्टेप रिपीट कर दिया मैंने. सो इज इट क्लियर नाउ? जस्ट टाइप यस और नो, राइट. यस, साइन चेंजिंग आफ्टर द स्टेप. In step 3, you have, after step 3, that is multiplying divisor with first term of quotient, then you have to change the sign. Why? Because you are subtracting it from dividend. Okay, so is it easy? Division of polynomial कर सकते हो, isn't it? So division of polynomial आसान है. ये सारी चीजें
आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है, राइट। अब ये सिंस ये पूरे स्टेप्स हैं तो 5 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बुक में आपको तो विकास सबसे पहले उसमें x + 2x आपका 3x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x² + 3x - 1। Now Prahlad is telling, sir, in this problem can we have the remainder in terms of negative sign? Yes, why not? Remainder negative आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? Obviously आ सकता है। Okay, now let me tell you remainder theorem, but चलो अब remainder theorem ज्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही करो। Okay, तो इसके बेस पे आपको आज का होमवर्क क्या होगा? So today's homework is, in formula book you have to write this division of polynomial 3 times. Okay, 3 times is enough. In regular book first you have to finish 9M 2.2। 9M 2.2 में आपको जितने डाउट्स थे वो सारे के सारे आपको फिनिश करने हैं। इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क यू हैव टू फिनिश दिस। हाँ, दिस विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिखना ही है, एग्जाम्पल के बिना कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड 9M 2.3 इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क ये आपको ट्राई करना है। Okay, so this is your homework for today. So your formula book you have to write 3 times. In regular book 9M 2.2 you have to finish your doubts of in-class exercise and homework, and 9M 2.3 you have to try all the questions of in-class exercise and homework. Okay, any other questions you want to ask? Any other queries? Is anyone is having any other doubts? Just let me know. Aditya, just take screenshot of this homework. Okay, this is the homework. In formula book you have to write this whole formula, whole steps with this example 3 times. In regular book 9M 2.2 in class exercise and homework you have to finish, and 9M 2.3 in class exercise and homework you have to try. Just one example. So Sakib is asking, sir, how to find by multiplying 2 with x plus p. Now let me show you, Sakib. √2 into x plus p, समझना। अब ये √2 into x plus p, इसमें -2 रख के आपका आंसर 0 आ रहा है। ओके, सो √2x plus p into √2 equal to 0। ओके, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ x वैल्यू इज -2, तो ये आपका -2 हो जाएगा। तो p √2 विल बी इक्वल टू -2 उस तरफ जाएगा 2 √2। अब ये √2 दोनों जगह से कैंसल, p इज इक्वल टू 2। पता चला साकिब? अरे इज इट क्लियर? बोलो अहद, क्या डाउट है? यू आर अनम्यूटेड नाउ, बोलो अहद। सर जो आप लॉन्ग डिवीजन किए थे उसमें ऑपोजिट साइन आएगा क्या कभी भी सब्ट्रैक्शन के बाद? सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑपोजिट साइन लेना ही पड़ेगा ना। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? ऑपोजिट साइन ही तो लेते हैं। नहीं सर, जो आप -2x - 1 और उसके नीचे -2x - 2 लिए थे ना सर? हाँ, ले लिया है। हाँ, अगर माइनस के जगह प्लस होता तो जो आपने प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस होता। हाँ, नहीं, हमें इधर प्लस लेना ही नहीं है। आप जो ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो ये स्टेप्स फॉलो करने से अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस स्टेप्स। ओके, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे एग्जैक्टली वही यहाँ पे आएगा। सर अब -1 सर -2x हाँ बोलो, -2x के बाद क्या? सर -2x - 1 आप लिखे ना सर? हाँ, लिखा ना, ये रहा। उसके नीचे है -2x - 2। हाँ, लिखा मैंने -2x - 2।
सर उसके नीचे जो प्लस प्लस वाला ऑपरेशन है वो अगर साइन ऊपर अलग रहने से चेंज होगा? अलग ऊपर आएगा ही नहीं ना अहद, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ना, तो अगर यहाँ पे -2x है ना तो इधर -2x ही आएगा, अलग आएगा ही नहीं। अगर अलग आ रहा है दैट मीन्स आपकी कोई गलती हुई है इन स्टेप्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके नाउ सात्विक सर, नॉर्मल डिवीजन। नितिन सर, इज इट कंपलसरी? क्या कंपलसरी है नितिन? सेम आएगा वो कंपलसरी है? तो यस, सेम आएगा वो कंपलसरी है, क्योंकि ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो इसके नीचे ये सेम ही आना चाहिए। ओके, तो शैल वी एंड द मीटिंग नाउ? एनी अदर डाउट्स? ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।